Welcome, welcome, welcome. This is Rajat over here. Welcome to this live stream. Super happy to and excited to be welcoming our latest guest of the celebrity red carpet. That's Mr. Raees Shaikh, a corporate employee turned business person who has done extensive real life business, later became a trader. He's worked abroad for a lot of years. He has a super interesting story about Bitcoin. And then now he's become an educator on the blockchain technology, especially cryptocurrencies. He's got a great story about the potential of the Indian market on the crypto front. And if you're into the make money space, if you're a coach consultant, or even if you're even if you're somebody who is into commission selling of make money products like a mutual fund guy or a network marketer or something like that, you need to understand this asset class. If you're a commodity trader, you need to understand this asset class. If you're dealing into stocks and shares or advising people on it, you need to understand this asset class. And we've got the best person, best person on the planet talking to us about this today. What I'm going to do is I'm going to just get Mr. Raees over here on the screen, and then you can welcome everybody. Can welcome him over here with lots of comments and stuff. So yeah, Mr. Sumit is saying most awaited event has begun. Amazing to hear that. Awesome. Welcome, 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 Mr. Raees. How are you doing? Fantastic, sir. Top of the world. It's an honor and a privilege to be here with this, celeb interview. And I think today is an opportunity where I would love to speak my heart out to all the friends who are listening around. So welcome you all, folks. Amazing. Okay, we got a bunch of people commenting on the stream. So I'd just like to let you know that if you're commenting over here in the screen, just do me a favor and open in a separate browser window. Just open chat.restream.io/fb. That's chat.restream.io/fb, so that I can display your name along with your comment. Like, I'm seeing a couple of people who have who are saying excited to hear about the future, but I can't see their names. So just open chat.restream.io/fb in a separate window, and that should be enough. Then you can probably cancel that window. Okay. So okay, amazing. We got Dr. Kamal, who's saying evening and welcome, Raees sir. Amazing. We've got Ms. Fantastic. Sugra, Thank looking you. Good forward to hear evening. from Raees sir. Awesome. Okay, great. So great. So you're a businessman turned trader turned educator, especially in regard to blockchain technology. That's super to hear. So let us start with, how did you choose this domain? It's a very less known domain. It's been going up and down. It's been in the news, for the last 4 or 5 years continuously for some reason or the other. Right. There's a lot of information, and I also believe a lot of confusing information about this. True. You are of the belief that this could be one of the most important asset classes going forward. So before we get into the potential of the asset class itself, let's go into your story on how you got interested in this. So just let's start with that. How did you get interested in Fantastic. blockchain and crypto? So, to most of the people who know me as Raees Sheikh, I just want to let the some of the people who don't know myself. So my name is Raees Sheikh, and by background, I'm an IT engineer. I graduated from Mumbai University, and then I was doing some 2 3 years of work in the IT industry with some. At that time, there were not many people who were into the IT. I'm talking about 1996, the time period when I graduated. Okay, so I was very young and I was loving to get into this field of IT. And the only reason why I got into the IT hardware industry, because I thought that men should work hard, and the software work is for women. So I thought, I don't want to do that. I am a guy who wants to roam about, do some hard work. So I found was hardware industry is a very fascinating thing. And later on, I realized there was more money in the software industry than the hardware. So what I mean to say is, generally we land up into things where we generally don't have no plans, and Mhm. it's Yeah. sometimes accidental. So at that time, I had nobody to counsel. Today we have a lot of people, a lot of resources, Google, internet, but at that time there were not many people who could actually give you a guidance that, okay, you should go in this field because you've learned this, you can do this. Nothing. So it was like more like dimag mein kya aata hai, and just do that. So, and
incidentally, me getting into the crypto world is also an accidental thing, and that is also quite crazy. So I was working as an IT manager with Toyota Motors. I've been to Saudi Arabia, I've served them for long number of years, 7 years there. And I still remember Y2K project. We were the main team who was handling the Y2K implementation for them. And then I uh, uh, decided to move on, and I started working with a VSAT company in Dubai, who was into transmission of internet over satellite. Okay, especially in the African countries, because the only reason why we did that was, people, when we were putting the telecom lines in Africa, the tower companies were installing all the wires, and within a week, it took like 6 months to deploy those cables and wiring. And later on, within 1 month, the whole cabling was gone, sold, robbed, and sold back. So the only option they thought, for those countries to have internet, is to have a wireless option, so that nobody can destroy this cable. So we had a headquarter in Dubai, and we were serving the Middle East and North African regions, basically covering their space. And it was really fun, and it was a very high tech job, and it involved a lot of traveling and uh, going around. I still remember we had a project which was going on in Afghanistan, and Kabul, and we they were into some kind of internet deployment. And I was really wishing that it could wrap up very fast, and so that the next bomb or the next shell do not fall in the area where I'm working. It was very, very, I cannot express that thing, but I, I took that adventure in my life, and I people were guiding me not to go, but I took that as a challenge, that if it is a call of duty and somebody wants this kind of services over there, as a customer, I need to go out and actually deploy it, that. So I was there. So I always respect people who are dutiful and uh, uh, towards their job, and that's how we actually learned in the initial days, being very loyal to what your profession is and to your work is. So my story started in Dubai. When I was in Dubai at the time, I somebody owed me some small amount of money, 2000 dirhams at that time. Was not much, maybe 2-3 lakh rupees at that time. And he told me that he was short on cash, so he had Bitcoin at that time, and he told me to offer something, Bitcoin. And I said, okay, well, I don't know what Bitcoin was at that time. I thought my my thought process about Bitcoin was something like physical coin, which people Wow. can put in the gaming. There was those gaming kiosk machines, and I'm not interested in gaming neither. I was married, I was not having children. So I thought, yeah, where will I spend these Bitcoins? I thought my perception of Bitcoin was this, a physical thing. So he said, fine, you bring those Bitcoins to me, I will see what I can do. And then finally he came to me, meet me, and I told him, what are those Bitcoins? He said, it's in the email, Raees. So I was accepting, expecting a physical thing, and he told me that's in a bit, it's coming in the email. So I immediately I thought that this guy is scamming me. Nothing can happen on the email and this and that. I actually bombarded him for wasting my time, and trying to have squeaky excuses not to give me my money back. And I resorted. So he said, no, it's there, you can find. And I did not listen, and later on he paid me my money and all of that. But I got a term Bitcoin, and I became, because I was in the IT industry, I kept searching about this particular word, Bitcoin, what is it, trying to understand. I could not much understand this. But later on, when I understood that this particular coin, the rate crossed $100. So I was thinking, when I could have taken that at that time, it was just $1. So $1 to $100, how many times loss I have done. So the more the rate of the Bitcoin, till today, I'm cursing myself. The more That you're going into loss. yes, absolutely. The more people cannot understand my pain, they think that, why are you so painful when the rate is going up? You should be happy about it. Why are you so painful? So this is a very painful adventure. But then I learned a lot of opportunity. What sometimes a lot of opportunities come across, and incidentally, God, by accident puts you through those. But if you're not careful and you don't pay attention, I mean, you will definitely miss your fortune. So that is the lesson which I took, and from that instance I became extremely careful about every card which is thrown to me. मतलब मैं वो पत्ता उठा के देखूंगा जरूर वो मेरे काम का है या नहीं. अगर नहीं होगा तो I will drop it, but otherwise I will waste my time, I will invest my time to actually look at the opportunity. And so I started studying the crypto projects, lot of things
came in. 2-3 साल कुछ नहीं हुआ, but then finally, I got somebody who guided me, who actually not guided, forced me to actually invest in the cryptocurrency, and I made some money, and that's how the trust built. So मजा आया मुझे. Amazing. Amazing, amazing story. Mr. Chandran is saying awesome. Thank you, Mr. Chandra. Dr. Kamal is saying crypto is already always garnered my curiosity. I want to learn more. Amazing. Fantastic, fantastic. Yes. Great story of So, courage. and I'm telling that someday maybe somebody will bump in you, maybe a family member, maybe a friend, and he will talk about crypto. Please pay attention and please listen to that person. Otherwise, वो pain आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे. You will not live with. I'm living with that pain. Till the end of the day. जब तक हूँ वो pain मुझे रहेगा, because I know what loss I've done to myself. Yeah. जी जी. Like in Startup Frat, we say, pay me something worth more than money. That is social Right. proof. So this guy was paying you something worth more than money. Absolutely, absolutely, absolutely. I didn't pay attention. I didn't pay attention. Yes, yes. Yeah. Okay. So, what is exactly now for the layman and for the people who may have just gotten to know about blockchain technology or crypto? What exactly is the secret around crypto, and how are you, how are you bringing your knowledge to the market? What do you want people to achieve out of what you're doing in this area? Okay, so basically, when I started, studying about crypto as a technology, there were nightmares, because there was no single source of information. Matlab, the only source of information to me was the companies or the friends around. Okay. Those were around, and they had information in bits and pieces, so they Hmm. could only tell me about crypto which part they got exposed to. मतलब मुझे वो छोटा सा ही इंफॉर्मेशन मिलती थी, और कुछ दिनों तक मुझे लगता था यही है क्रिप्टो करेंसी. मतलब कोई जैसे अगर ट्रेडर मिल गया और उसने बताया कि आई ट्रेडेड मनी एंड आई मेड दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, सो मुझे लगता था कि क्रिप्टो करेंसी मीन्स आई हैव टू ट्रेड, और आई हेटेड टू बिकम अ ट्रेडर. तो मैं फिर थोड़े दिन उसको भूल जाता था कि नहीं नहीं, आई डोंट वांट टू बिकम द ट्रेडर. नेक्स्ट कोई न्यूज आती थी, आर्टिकल्स आती थी कि सम कॉइन हैज रियली गॉन इन वैल्यू बाय समबडी जस्ट होल्डिंग द क्रिप्टो, ही मेड अ लॉट ऑफ मनी. तो फिर मैं उसके बाद ऊपर रिसर्च करता था कि यार होल्ड करके कैसे पैसे बढ़ते, चलो लेट्स सी. सो देन आई अंडरस्टूड कि जैसे गोल्ड को होल्ड करते हैं लोग, उसी Hmm. तरह क्रिप्टो को भी आप होल्ड करके कुछ नहीं करके बिगर ट्रेड करके भी पैसे बना सकते हो. सो देन द सेकेंड एलिमेंट केम टू मी, यार अच्छा अच्छा ऐसा भी होता है क्रिप्टो में. यू जस्ट होल्ड क्रिप्टो समवेयर, एंड देन by time, as time goes up, because of the demand supply, it का eventually rate बढ़ता है. So I found second experimental way to make money with crypto. ये because it was not documented, Hmm. and nobody was knowing the entire picture. The only picture they knew was which picture they got exposed to. Then Yep. I attended a conference, Dubai. Being part of the Dubai was, Dubai is Mm-hmm. little bit ahead of the other countries. So Oh. वहाँ पे यूएस यूरोप के बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, और Huh. आई जनरली वीकेंड्स पे मेरा वो एक पास टाइम ही होता था, बिकॉज ज़्यादा कुछ करने को था नहीं, फैमिली थी नहीं, तो आई यूज्ड टू गो Huh. टू एनी एग्जीबिशन. सो Wow. आई वेंट टू एन एग्जीबिशन, देन आई गॉट अ न्यू वर्ड फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, ब्लॉकचेन. तो Amazing. ब्लॉकचेन ब्लॉक्ड माय माइंड. आई सेड व्हाट ए ब्लॉक, कभी आईटी में हमने पढ़ा ही नहीं, ब्लॉकचेन मतलब व्हाट इज दिस, व्हाई वुड से somebody chain a block. So then I started understanding what a blockchain is. तो मुझे लगा यार ये दोनों अलग अलग है. मे बी इनिशियली आई थॉट ब्लॉकचेन इज अनदर टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी, जस्ट लाइक बिटकॉइन. शायद नया कुछ लाया है इन्होंने और उसका नाम ही चेन लग दिया. तो देन आई स्टार्टेड familiarizing with the word blockchain. Then I understood nahi, it's the system of any cryptocurrency which is known as the blockchain system. Okay, or simply because blocks of information are connected together, that's why it's called chain. So that different different blocks, मतलब Mm-hmm. एक जैसे सिंपल वे में अगर मैं समझाऊं किसी को, जैसे अगर आप डेटा एक स्टोर करते हो, एक सॉन्ग है या एक पिक्चर है या एक वीडियो है, तो आप एक अपने मशीन में स्टोर करते हो, तो दैट इज स्टोर्ड इन योर पीसी. So Mm-hmm. if it break down or it gets hacked, it gets something, the whole data is gone, right? Unless Yes. you take a backup. So Yes. that is a challenge. Now, because of the blockchain, what happens? It distributes the data into small information blocks that Okay. is stored in a different computers all over the world. Okay. जो भी उस ब्लॉकचेन कम्युनिटी का मेंबर है, वो पर्टिकुलर पीसी, लैपटॉप, now even mobile phones will hold that much instance of data. And so that if even if one element of the data is gone,
it can rebuild the data. So Mm. the every rebuilding information is in the block. So Mm. the blockchain in the simple way is the method where the data can be rebuilt. It is very secure, very transparent, and that's why they selected cryptocurrency, because currency है तो घूमना नहीं चाहिए, फटना नहीं चाहिए. There are Mm. certain limitations. That's why blockchain is a de facto storage place for the cryptocurrency. Mm. Okay, so I Amazing. understood another element. Again, this was why, because I went into a conference which was onto blockchain. मतलब otherwise और 2-3 साल मेरे लग जाते blockchain word ढूंढने या पहुंचने तक. Okay, now doing this, so I found that ये इतना difficult अगर मेरे लिए है, इतनी journey difficult हो रही है, how would a common man understand this all technology jargon? There are Mm. hundreds of words, and every time people should not learn accidentally. Yeah. देयर हैज टू बी अ मेथड, प्रॉपर सिस्टमैटिक वे. जैसे अगर हम लोग 12th के बाद साइंस लेते हैं तो वी बिकम क्वालिफाइड इन द फील्ड ऑफ साइंस. Yep. somebody study medicine, he become a doctor. Somebody study engineering, he become engineer. वैसे इस फील्ड में क्यों नहीं है? Because Mm. why? Because traditional people are still in the fight of whether it should be illegal या legal. इसके फाइट में एजुकेशन पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है. Yep. सो आई अंडरस्टूड कि ये कोई भी कॉलेज इसमें आएगी नहीं, कोई भी स्कूल आएगा नहीं. इट इज टू लेट. तो आई हैव टू डिग इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट कंपनी में लंबे लंबे ईमेल्स लिखता था तो क्रिप्टो कंपनीज टू गिव मी सम Mm. डेटा सो दैट आई Mm. कैन अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट. बट आई फेल्ट कि यार ये प्रोसेस सब नहीं कर सकते. आई बीइंग एन Mm. आईटी पर्सन, यस मे बी इट इज माय इंटरेस्ट, इसलिए मैं कर रहा हूँ. other Mm. person will not do it. So what can I do as a value addition? How can I make it simple, accessible to people, so that even a 7 year old child can be able to understand cryptocurrency? तो सिंपल वे में अगर आपको मैं आज बताऊं, cryptocurrency is a format of currency which is into digital format. Okay, Mhm. but it is not digit. It is a physical virtual currency which will actually transfer from point A to point B. Okay, not in the debit books. For example, somebody might say यार डिजिटल करेंसी जो आज हम यूज कर रहे हैं, जैसे जीपे है, पेटीएम Yep. है, Yep. ये ऑलरेडी चल रहा है, तो फिर क्रिप्टो Correct. करेंसी की जरूरत क्या है? राइट. नाउ यू अंडरस्टैंड व्हेन यू आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम जीपे 1 रुपीज टू somebody else, actually money is not getting transferred. Yep. आपके बैंक में कहीं ना कहीं डेबिट होता है, आपके बैंक Yep. से वो निकलता है और किसी के बैंक में ऐड हो जाता है, Yep. बैकग्राउंड में होता है, और आपको खाली रिजल्ट स्क्रीन पे शो होता है. ओके, बट इफ यू सी कि आप अगर किसी को 1 रुपया या 10 रुपया देते हो, तो फिजिकली आप नोट देते हो, फिजिकली वो Yep. बंदा ले लेता है. सो Yep. दैट्स अ फिजिकल ट्रांसफर. Yep. तो वर्चुअल स्पेस में फिजिकल ट्रांसफर करता है क्रिप्टो करेंसी. ओके, विदाउट एनी थर्ड पार्टी सिस्टम, विदाउट द बैंक और एनीबॉडी एल्स. मतलब अगर मैं किसी को कैश दे रहा हूँ Hmm. आज, तो Hmm. मुझे कोई थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है. आई Correct. जस्ट नीड माई सेल्फ एंड द लेंडर, टेकर. Correct. दैट्स Correct. इट, द टू Yeah. पार्टी. बट इफ आई एम गिविंग थ्रू माई बैंक Yep. digital system, then we have 4 people: my bank, his bank, and we two both. Yes. Yes. So cryptocurrency solves this problem of the currency transfers. It's a today's version of physical cash. Amazing. Okay. Amazing, amazing insights. I've got amazing. We've got Binodji who's saying that's a great start to the understanding and learning. Yes. Sumit is saying, I hope to learn a lot and clear a lot of myths. Yes, I've got some questions about myths also. Okay. Yes. And then, okay, I've got Mr. Ajoy who's saying super excited, Oh watching wow! and Fantastic. curious to know more. More. Okay, Fantastic. I got Fantastic. somebody. I cannot display the name unless they hit that link. But it's saying same happened to me. I think they mistook some crypto Fantastic. opportunity and Yes. they had a notional loss just like you. Yeah. Okay, somebody is saying so Raees sir is sharing the recipe to become Raees with crypto. Oh, thank you so much. Amazing. See, my name Raees, and I always thank my parents for selecting my name, especially my dad, because that puts me an additional pressure to become rich. मतलब मैं आराम से बैठ ही नहीं सकता because of the name. The moment I say my name to anybody, he's thinking अच्छा रईस. Either he becomes very critical or he becomes like humorous कि यार रईस मतलब रईस हो यार तुम, मतलब भरो बिल, दे दो हमको सारी चीजें. So yes. Awesome, man. Okay, I have Santosh sir. He's saying, I am hoping to get my doubts cleared today. Yes, I will show Yes. you.
The link to Mr. Raees's, in fact, just let me just display the runner a little bit for a couple of minutes. Yes. In case anybody wants a personal consultation, you got calendly.com/crypto Raees. Also, Yes. feel free to ask your questions in the stream. I'll be taking certain breaks and taking all your questions and asking them to Raees sir. So feel free to put in your questions. So yes, Santoji said I want my questions answered. Amazing. Let me Yes. just go to what else. Okay, somebody's saying straight from the heart, Raees sir. Amazing. Thank you very much. Thank you very much. Awesome. Okay, Mr. Dhawal is saying, thank you for this insights. Amazing. Yeah, I'll have too many questions also. So let me go to the questions. Meanwhile, right below the stream, you've got calendly.com/crypto Raees in case you want a personal consultation. Raees sir has agreed to free up some slots on the calendar for free. Yes. If you're watching this live stream, then you can go and access it. Is one of the things he has given as a gift to us. So thank you very much, Raees sir, for giving your Welcome, sir. time and your contact link. Welcome, sir. Okay. So now I have this question, which is our general question for you, which is apart from lack of like single source of information, why do you think there is like a negative hype or something? Like a lot of times people say while it was Bitcoin was growing up, everybody was bullish. And then a Right. lot of people, including some very serious investors like Warren Buffett and all, they've said, Right. I'm glad I'm not investing in it. I don't understand it. I would never invest in anything I don't understand. So, what is this controversy? What are governments saying about it? Have governments put any like ban on anything? And then what it means to the normal user? Are they at risk? What is the like? What is the real truth? Okay. All right. तो इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चंस बेसिकली जब भी क्रिप्टो की बात होती है तो फर्स्ट क्वेश्चन जनरली यही आता है आज तक भी मैं बोल रहा हूँ इतनी 2023 है बट आई स्टिल फेस दिस क्वेश्चन वेदर इट इज लीगल और नॉट ओके सो दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड वेदर इट इज लीगल और नॉट 2017 तक एक एक क्वेश्चन मार्क था हमारी इंडस्ट्री पे क्रिप्टो इंडस्ट्री पे इंडियन गवर्नमेंट ने उसको फुल्ली यस भी नहीं बोला था और नो भी नहीं बोला था सो इट वाज एन एम्बिगिटी डिसीजन कि यार ये मना है और आरबीआई के रिकमेंडेशंस पे थोड़ा उस पे हॉल्ट भी लग गया था कि भाई यू शुड नॉट बी एबल टू ट्रेड एंड डू समथिंग इट वाज स्केप्टिकल बट फ्रॉम द रूल बुक देयर वाज नथिंग नो रूल व्हिच वाज सेइंग यू कैन नॉट डू होल्ड और क्रिप्टो और ट्रेड और क्रिप्टो तो एक एम्बिगिटी थी and that got challenged in the Supreme Court कि भाई you either tell us clearly whether it should be banned for Okay. life or Yeah. you give us clarity whether it is allowed. So Okay. people were sane enough to reach the Supreme Court and the Supreme Court had given a supreme golden verdict for the Indian generation and I'm very proud and thankful for that verdict because it has given access to so many new companies which have sprouted out of India on the blockchain and we are become the beneficiary without even knowing. I will share that also later. But उस वक्त एक एक ऐतिहासिक डिसीजन हुआ हिस्टोरिकल डिसीजन that they lifted the ban for the first time they said cryptocurrency cannot be banned okay Wow. so from that perspective the court simply accepted that it cannot be banned it is okay so you make the laws for how to deal with it और उसके बाद में बहुत सारे समिट्स हुए बहुत सारे गवर्नमेंट को गाइडलाइंस क्रिएट की गई और ये चलता रहा दौर उसके बाद उसको एक्सेप्ट कर लिया गया नाउ टुडे यू कैन बाय फ्रॉम इंडियन रजिस्टर्ड एक्सचेंज 1% टीडीएस देख के आप ऑफिशियली अपने बैंक अकाउंट से क्रिप्टो खरीद सकते हो आप ऑफिशियली इंडियन एक्सचेंज पे जाके सेल कर सकते हो जो भी कैपिटल गेन है एज पर द करंट गवर्नमेंट का नाम यू कैन पे एंड शो इट इन द इनकम टैक्स ऑल्सो सो Wow. दैट इज बिकम अ कैटेगरी सो देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट लीगैलिटी और उसके अलावा अगर मैं आपको थोड़ा एश्योरेंस दूं तो सोने पे सुहागा ये हुआ कि 2023 स्टार्ट में ही हमारी खुद की देश की अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी भी लॉन्च हो चुकी है जिसको डिजिटल करेंसी बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी नहीं बोलते हैं ताकि वो स्कैम की तरह लोग नहीं देखें सो वी हैव द ई रूपी विच इज गोइंग टू बी soon in the marketplace we all will have access Wow. matlab Wow. you will not believe how much money revenue it is going to save for the Indian government see there is a research done that not research it's factual of course they know it that almost 15 to between 15 and 17% money is gone in the printing storing transportation and deployment of the rupee तो Yeah. जब 100 रुपए का नोट बनता है तो उसके पीछे 17 18 20 रुपए खर्चा हो जाते हैं Yep. तो एक्चुअल वैल्यू 80 रुपीज ही होता है यू Yep. अंडरस्टैंड Yep. 20 रुपीज इज जस्ट लॉस
in protecting it, transporting it, printing it, and distributing it. Yeah. Now that all 20% money can be saved simply because of the e-rupee. Okay, Okay. and that can only be possible because the blockchain is a de facto blockchain. They have accepted it. Slowly slowly देखिए सब रहेगा. आज हम Hmm. लोग डिजिटल पेमेंट सिस्टम पे आ गए, लेकिन Hmm. स्टिल देर इज कॉइन्स, वी आर यूजिंग समटाइम कॉइन्स, 5 रुपया 10 रुपया Yep. Yep. चाय Yep. पीते हैं. अभी Yep. भी नोट्स हमारे पास होती है, फिजिकल Yep. पेपर मनी, Yep. दो Yep. वी डोंट रिक्वायर बट स्टिल देयर. Yep. फिजिकल प्लास्टिक कार्ड्स भी हम रखते हैं, राइट? Yep. हम Yep. रखते हैं. Yep. Yeah. हमारे पास जीपे फोन पे भी है, वो रखते Yeah. हैं, सब कुछ Yeah. रखते हैं. Yeah. उसके अलावा क्रिप्टो करेंसी भी रहेगी आपके पास और आप वो भी यूज करोगे. सो वन विल नॉट रिप्लेस दी अदर. व्हेन पीपल आर थिंकिंग कि यार ये आने से सारा कुछ बंद हो जाएगा, हाँ ऑफ कोर्स बंद होगा, बट इतना जल्दी नहीं, बहुत टाइम लगेगा उसमें. बट इट विल बी एक्सेप्टेड आल्सो एज अ मनी स्टैंडर्ड. तो क्रिप्टो करेंसी का मतलब यही है कि ये करेंसी मींस यू विल बी एबल टू ट्रांजैक्ट विद इट. ओके. Lovely stuff. Lovely यस stuff. यस यस यस. तो Awesome. ये ये ही मैं ये बोलूंगा कि फर्स्ट इज इट इज लीगल. सेकेंड थिंग, इसके अंदर जो एम्बिग्यूटी थी गवर्नमेंट्स ने हटा दी है, थैंकफुली. नॉट ओनली इंडियन गवर्नमेंट, देयर आर मोर देन 160 गवर्नमेंट्स ऑफ ऑल अराउंड द वर्ल्ड. यूएस, जापान, Germany, whole of Europe, whole of Asia, even Middle East, everybody has accepted crypto as a standard. So बाकी की भी बच्चे कुछ लोग हैं वो आ जाएंगे सर, कोई कोई इशू नहीं है. Great. So at this time, I'd just like to take one question for you, Rai sir. Yes, There is yes. somebody who's asking, what are the largest and smallest amounts that one can invest in crypto? Okay, fantastic. So these largest and smallest amount is $1. Okay. अब अगर आपके पास $1 है तो उससे भी आप क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हो, स्टोर कर सकते हो. हाँ, एक लिमिटेशन है कि द एक्सचेंजेस विल अलाउ ओनली टू ट्रांजेक्ट वैल्यू अबाउट $10. मतलब एक 700-800 रुपए के करीब वो ट्रांजेक्शन आपको करने देगा. तो बिकॉज इट्स अ वॉल्यूमेट्रिक थिंग, उतना Correct. ट्रांजेक्शन में उतना जस्टिफाई हो जाएगा उनके लिए. Correct. जैसे कि अगर समझो किसी को अगर बैंक से आरटीजीएस करना है 5 रुपया, तो इट विल नॉट मेक सेंस यार. Yeah. 5 रुपया तुमको आरटीजीएस करना है, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो. द एक्सचेंज हैज पुट दैट लिमिटेशन. फ्रॉम द टेक्नोलॉजी परस्पेक्टिव, सी बिटकॉइन, 1 बिटकॉइन इज डिविजिबल बाय 8 नंबर ऑफ जीरो. सो 10 करोड़ उसके छोटे छोटे टुकड़े बन सकते हैं, सतोशीज बन सकते हैं. सो Okay. बिटकॉइन में आप एक पैसे का भी अगर किसी को पेमेंट है, 1 पैसा और 0.1 पैसा, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडियन रुपीज का Yeah. पैसा, Yeah. Yeah. that much amount also bitcoin can, you can give it to somebody because of the divisibility factor. Yeah. Yeah. So it doesn't matter of what rate it goes, 24,000 अभी रेट जा रहा है, you can still buy 5 rupees, 10 rupees, 100 rupees, 500 rupees worth of bitcoin and store it. तो ऐसा नहीं है कि अगर 8,000 का शेयर है तो 200 रुपए में नहीं खरीद सकते. नहीं ऐसा, Not like because this. of the, no it is Yeah. not, yes Fully it's a liquid. very good point. It's Yeah. like it is having the up to 8 divisibility factor, मतलब 10 करोड़ टुकड़े उसके बन सकते हैं. Fully जी, liquid. As per your एब्सोल्युटली जितना फुल्ली. पीना है पियो. जी 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 जी. जितने Okay. टुकड़े बनाने हैं गोल्ड के, जैसे गोल्ड है, अगर हाँ. आपका 1 किलो का बार है, आप हाँ. उसका 0.1 ग्राम का भी टुकड़ा लोगे तो उतना ही वैल्यू मिलेगा आपको, और उतना ही उसका प्रेशियस मेटल ट्रीट किया जाएगा. ऐसा नहीं है कि वो बड़ा है तो उसकी वैल्यू ज्यादा है, छोटा है तो उसकी वैल्यू कम नहीं होगी. एज गुड एज इट इज बिटकॉइन, एवरी वैल्यू इज काउंटेड. इवन 100 रुपीज कैन बिकम मे बी 1 लाख रुपीज, वी डोंट नो. Awesome. Yeah. So, real quick for all our viewers, I just want to just quickly talk about what Mr. Raees is doing. So, I am going to take all the questions. All the questions are going to be answered today. In addition to that, Mr. Raees has promised us few slots of his time for free. अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन कोई Q&A चाहिए तो you can go ahead and book at Yes. calendly.com/cryptorace. All these resources he has made available to us. He has made available his time today, for which we are thankful. I just want to give real quick that he has got a fully loaded educational program for people who want to either trade or make money or understand crypto or understand crypto from the purpose of doing a business in it as a trader or as an educator. It's called Ultimate Crypto Bootcamp. That's his educational program, and that he has launched in the market. He's among the forerunners of क्रिप्टो एजुकेशन इन द कंट्री. वो तो खैर अभी तक सब लोग समझ ही गए होंगे. बट इस प्रोग्राम के बारे में कैन वी टॉक अबाउट व्हाट आर द सीक्रेट्स दैट यू
share what is unique about this program. बहुत सारे लोग बात करते हैं crypto education के बारे में. I think there are many other educational programs also. So tell us a little bit about your ultimate crypto bootcamp, sir. Okay, fantastic. So it's my favorite question कि भाई आप क्या सिखाते हो? Everything is there on the internet और सारे लोग सिखा रहे हैं, तो how are you different, Raees? What are you different? Yeah. First of all, I want to say that कि it is nothing different. It is the same thing. Okay, but it is वो is in nectar की तरह जमा हुआ इंफॉर्मेशन है. जैसे कि अगर आपको मैं बोलूँ कि भाई शहद फूल में है, ओके, आप जाओ पूरी दुनिया घूमो, फूल कलेक्ट करो, लेके आओ और शहद बनाओ और पी जाओ, इट्स Hmm. पॉसिबल. Hmm. बट यू कैन इमेजिन हाउ मच टाइम, एनर्जी, एफर्ट, नॉलेज इज रिक्वायर्ड टू डू ऑल ऑफ दैट. ऑफ कोर्स देयर इज. Yes, वो सब definitely. टाइम अगर आपको करना है, यस, फील फ्री. देयर इज अ फ्री चैनल अवेलेबल, एवरीथिंग इज अवेलेबल. Yes. नाउ आई स्पेंड अ लॉट ऑफ इयर्स, आई एम नॉट सेइंग डेज, मंथ्स, ईयर, बिकॉज वैसा कोई मीडिया था ही नहीं जो सिखाए उंगली पकड़ के Hmm. चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3. अब बना रहे हैं हम लोग चैप्टर्स. सो बेसिकली दैट्स व्हाई दैट, सो वी आर थिंकिंग कि हमारे अडॉप्शन से टोकन, एसेट, क्लास, ये सब समझने के लिए लोगों को क्या क्या चाहिए, तो वी Yeah. आर क्रिएटिंग द कंटेंट. जैसे हम बच्चे को स्कूल में डालते हैं फर्स्ट से लेके 10th तक, तो ऑलरेडी कंटेंट क्लियर है. 10th से 15 तक, उसके ग्रेजुएशन तक कंटेंट क्लियर है. उसको इंजीनियरिंग डालना है, कंटेंट क्लियर है. सालों साल से वो कंटेंट चल रहा है, अपडेट हो रहा है. बट ये न्यू जब चीज आती है दुनिया में, तो उसका कंटेंट नहीं होता है. सो somebody has to take the onus to create that content, right? So we collected those much wisdoms. I am a part of lot of other crypto groups like Ethereum, Bitcoin, Tron, Matic, all these development teams जहाँ पे बहुत सारे developers है. We understand their mindset कि ये टेक्नोलॉजी को किस तरह से ये ऐसा यूजेबल मास अडॉप्शन में लेके आते हैं. इट्स अ वेरी चैलेंजिंग, इट्स नॉट वेरी इजी. जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज जो है, जैसे एप्पल है या माइक्रोसॉफ्ट है, दे आर स्पेंडिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग बेसिकली टू मार्केट द प्रोडक्ट. जहाँ और क्रिप्टो को आप देखोगे, 1 रुपए की बिटकॉइन की एड नहीं चलती है कहीं पर. ना कभी कहीं होर्डिंग देखा होगा आपने, ना कभी आपने कोई किसी को बड़ा चीज बताते हुए सुना Yeah. होगा, Yeah. Yeah. वो एनालिस्ट को आके कि ऐसा हो जाए. बट स्टिल हजारों लोग, करोड़ लोगों ने ले लिया और उसका वैल्यूएशन इतना बढ़ गया. तो हाउ दे आर एबल टू क्रिएट दैट वायरलिटी. आई ऑलवेज फील द अमाउंट ऑफ कम्युनिटी, एंड दैट इज द पावर ऑफ द कम्युनिटी. जो भी ये ब्लॉकचेन्स के पीछे कम्युनिटी होती है, कॉल इट बिटकॉइन और इथेरियम, those are the people who are responsible for keeping, maintaining, updating, promoting, and adding new community members so that the valuation keeps growing and everybody benefits. तो हमने सारे कंटेंट को ड्रामेटिकली पैक किया है, एंड वी हैव मेड इट वेरी रेलेवेंट, बिकॉज Hmm. आज 2009 में जो हुआ है, मे बी उस टाइम के लिए वो रेलेवेंट था जब बिटकॉइन आया. बस हो सकता है 2023 में नहीं है रेलेवेंट. सो वी आर गिविंग यू पूरा इंसाइक्लोपीडिया नहीं दे रहे हैं. जो आज के टाइम में आपको यूजेबल इंफॉर्मेशन है, relevant information in a very simple and easy format we are giving to you. And that too, it's like teaching you via you do yourself. So within the 2 days 3 days workshop, आप अपना खुद वॉलेट खोलोगे, आप उसमें ट्रांजेक्ट करोगे, आप सारा. सो इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग, राइट? सो आप Wow. वो करके सीख जाओगे. दैट इज जो अभी तक नहीं आता आपको, आपको पता चल जाएगा, एक नया स्किल आप सीख जाओगे. सो इट्स अ प्रैक्टिकल वर्कशॉप जहाँ पे आप ऑलरेडी कम्युनिटी में आ जाओगे, एंड देन यू कैन एक्सप्लोर एंड लर्न द अदर वे. So that is the uniqueness about this thing. Plus, during the course, we observed that because of certain negative elements in the marketplace, or because it's a financial product, there are lot good people and bad people also. देखिए, जहाँ पे पैसा होगा वहाँ अच्छे लोग भी होंगे, बुरे लोग भी होंगे. Hmm. बैंक में तिजोरी भी होती है और बैंक में चोरी भी होती है. Hmm. दोनों चीजें होती है, राइट? तो वी अंडरस्टूड दैट बिटकॉइन में बहुत सारी चोरियां होती है, लोगों का लॉस होता है, और कुछ कुछ गलत प्रोजेक्ट्स बनाते हैं जहाँ प्रोजेक्ट स्कैम होते हैं. तो Hmm. वो चीज लोगों को कैसे क्लैरिटी से हम बता पाए इन अ प्रैक्टिकल वे. जैसे कि अगर मान लो मैंने आपको बोला ये गोल्ड कॉइन है, तो Hmm. अगर आपको गोल्ड कॉइन परखने का नॉलेज नहीं है, तो Hmm. आप मान लोगे या रिजेक्ट कर लोगे. दो पॉसिबिलिटी Hmm. है. Hmm. अगर आपने इसको मान लिया ये गोल्ड है, तो फिर आप मुझे गोल्ड का वैल्यू भी दे दोगे कि यार Hmm. ठीक है, मैंने मान लिया गोल्ड है, ले लो Hmm. 50,000 Hmm. का एक तोला जो भी Correct. है, Correct. हो गया. बट अगर आपने नहीं माना, तो आपने अपॉर्चुनिटी छोड़ दी. हो सकता है सच में गोल्ड था और आप उसको नकली समझ के छोड़ दिए. तो Correct. हाउ कैन, अब यही चीज अगर मैं कोई सुनार के पास लेके जाता हूँ, तो इफ आई टेक दिस टू अ गोल्ड स्मिथ, he will use a stone to check this up, and he will tell whether this is gold, whether it's got value or not. So that means he has got some information, Yep. some formula to Yep. verify.
Yep. तो मेरा यही था कि ये कोर्स में मैं एक्चुअली वो फॉर्मूला लोगों को दे दूं टू आइडेंटिफाई फेक एंड रियल क्रिप्टो करेंसी। Yep. दैट्स इट। उसके बाद वो अपने आप को बचा लेंगे। सो 90% डैमेज जो होने वाला है वो क्लियर हो जाएगा। बाकी अर्निंग का जो है, एज लॉन्ग एज यू नो यू आर देयर, मतलब आपने अपनी विकेट गवाई नहीं है तो रन्स तो बनते ही है ना, बोलते हैं क्रिकेट में। Yep. वी टेल Yep. इन क्रिकेट दैट इफ यू आर ऑन द पिच यू विल डेफिनेटली मेक। Yeah. Yes. Yes. So my job role in the course is to make you don't waste a single rupee on bad advices and schemes and scams. You're protected. So, what are the three secret approaches that you have in your program, and what are some of the things that people can look forward to if they go in for Ultimate Crypto Bootcamp? Okay, right. So there are, my secret recipe, as I said, that in crypto there is nothing secret because all open. But Yes. even in that openness of technology, we identified that there are certain magical formulas which people need to understand. So first of the thing which I told you, I train people to really understand what a real Bitcoin is, and what a fake Bitcoin is, right? Mhm. And ऐसा नहीं है कि नया कॉइन जब भी आया, न्यू न्यू समथिंग हैज कम, सो यू नीड टू इन्वेस्ट इन दैट। जैसे वी आर गिविंग ऑलवेज, आई गिव दिस एग्जांपल कि एक पर्सन बहुत लखनऊ के नवाब थे, एंड ही वाज लाइक वेरी वेरी शरीफ इंसान। तो उनसे पूछते थे, नवाब साहब आप रोज कैसे गिरते हो? तो बोलते यार नहीं, मैं जैसे ही घर से बाहर निकलता हूँ वहाँ पे रोज एक नया केले का छिलटा पड़ा होता है। अब वो केले का छिलटा पड़ा है तो मुझे उसमें पैर डाल फिसलना ही पड़ता है। तो आई डोंट नो हु इज पुटिंग दैट केले का छिलटा देयर। सो सो ये जो शाइनी ऑब्जेक्ट का सिंड्रोम है, व्हेन न्यू थिंग कम्स अप यू ऑलवेज try something out of it. Okay, so to avoid, how to avoid that thing, so that's part of one strategy. Mhm. Secondly, there are certain sniper strategy, जैसे कि आप Mhm. कोई आप फुल डे आपको कुछ नहीं करना है, कुछ ऐसी शॉर्टकट मेथड्स है टू मेक Mhm. मनी फास्ट। जैसे Mhm. कल मैं आपको बताऊं कि कोई एक कॉइन लॉन्च होने वाला है, एंड देयर इज गोइंग टू बी ह्यूज डिमांड फॉर द कॉइन, एंड Mhm. इट इज ओनली 5 रुपीज, और हो सकता है परसों वो 50 का हो जाए या 500 का हो जाए। So if I tell you that secret, how to identify that secret, will you not be able to make money in this short time? Of course. So Yes. Yes. there are these Definitely. minor strategies, so we teach them that. Plus, आपके पास बहुत पैसे हैं, I understand that people want to experiment with real money. So Yeah. under $1 gems I call that. So how to Okay. find those under $1 gems? ऐसे चीजें जो आपको, जैसे बिटकॉइन जब लॉन्च हुआ, it was under $1, आज $24,000 है। So imagine in 2009 or 10 somebody had bought 10,000 Bitcoin, Yeah. okay, जो कि हो चुका है 10,000 वीजा में। पापा जॉन ने पहला पिज्जा Yeah. बेचा था। So of Bitcoin history is recorded when somebody agreed to accept 10,000 coin from the founder Satoshi as in return for pizza. So Wow. at that time was the first valuation for the Bitcoin created officially. उससे Okay. पहले it was only in the computers, no physical transfer. So Yep. we tell people how to identify those gems, invest in those gems, or wait till your fortune clicks it away and takes it into the sky. So you will Amazing. learn that thing. Yes, yes. Thank you. Amazing, amazing stuff. Chat roll is also hot. Dr. Kamal is saying, looking forward to have a value session through the one-on-one. Mr. Sumit is saying, amazing news. Somebody is saying, superb explanation and clarity. Thank Mr. you. Thank Santosh you. is saying, I did not know a lot of these things. Mr. Fantastic. Prakash is here. He is big time into private transactions and with companies and equity and all that, inside equity. So he's saying thank you for removing so much confusion. Even a 7 or year old will be able to understand. Amazing. Yes. Rahul sir is there. He's saying awesome clarity. Thank you, sir. Thank you. Okay. Thank you. Mr. Sumit is saying you have taken a lot of pain for the benefit of the common man to get this information across. True, true. So thank you. Somebody on Facebook is saying Raees is really holding a physical Bitcoin. So, this is my reminding me of I was expecting this and it did not come, so I lost my opportunity. So do not believe, अपना बिलीफ सिस्टम के हिसाब से एक इमेजिनरी इमेज मत बना लो बिटकॉइन का या क्रिप्टो करेंसी का। वो इलीगल है, वो ड्रग पेडलर यूज करते हैं, वो आर्म्स वाले यूज करते हैं। एक इमेजिनेशन और न्यूज से आप मत ऐसा विजुअलाइजेशन बना लो जो आपको उससे दूर ले जाए, बिकॉज इट हैपेंड टू मी एंड आई Yeah. एम टेलिंग यू। So I lost the opportunity, but don't lose it. So I keep Yes. reminding myself.
तो मैंने फिजिकल बना Yes. लिया एक, that the Yes. Bitcoin does not look like this. I tell Yes. people. Okay, Commander Prakash is also asking, please, can you talk about FCNR rules for foreign currency inward remittance on the earnings? Okay, fantastic. Yep. Okay, so as you say that all the crypto exchanges in the world, and that this is a big debate which is happening in the crypto industry, and our honorary finance minister also, very knowledgeably also she said that, bringing a regulation in crypto is not the one single country cannot decide this, because there are multiple countries involved and cross border transactions are happening. So one rule, maybe the other person will not be able to follow the rule of one country. So in Yep. his country he will follow his rule, my country I'll follow my rule. So what is the intermediate practice? So under the G20 summit there is already a discussion to make AML compliance compulsory for the exchanges. So any exchange you deal now in India who is registered exchange, there is a KYC procedure. So who you are as a person, you just like in bank you have to give your KYC, your Aadhaar card, your PAN card, and all the legal documents. Even in India now, you have to give all the. So it's no more anonymous. See, the Yeah, government yeah, wants to know where from where the fund is coming and to where the fund is going. So yeah. using KYC, they can easily find out. Yeah, किसने I लिया also भाई? done my KYC by the way Absolutely. with an RBI authorized subsidiary. I have like a Absolutely, absolutely. technology. Secondly, there is a rule which they've made, anti-money laundering. This resolution is already part. So you have to always see when you are buying a crypto fund in exchange that is it AML compliant. If they are AML compliant exchanges or projects, then there is no harm because that country identifies and it is a regulated project. There's a very strong body which has come across which is into regulatory of cryptocurrencies basically. Now because the rule of the cryptocurrency FCNR rule, now till today the government does not accept Bitcoin or any cryptocurrency as a currency. So the rule of FCNR is not going to be applied unless you convert that into a usable Indian currency. तो जब तक आप उसको क्रिप्टो एसेट को क्रिप्टो में ही रखते हैं, it is no more a currency. Okay, Okay. the moment you convert that into a INR or local currency, that moment it become currency, and that moment you are going to do with KYC. So you Okay. are answerable कि भाई ये आपने कन्वर्ट किया है आपकी KYC से, तो Yeah. आपको वो बताना पड़ेगा कहाँ से आया कैसे आया. Okay. So FCNR clicks in at the point of conversion, it converting into the True. regular currency. Correct, correct, Okay, correct, correct. got it. Yes, Amazing. yes. Amazing. Zubair sir is saying it's a mind-boggling session. Thank you, sir. Thank you very much. Another And gentleman is saying it's really great information in very simple words. yeah, so Amazing. I purposely use very simple logic to it because generally मैं जब स्टडी कर रहा था तो बहुत सारी चीजें वीडियोस सेमिनार्स मुझे बार बार 3 से 4 बार 5 बार समझने पड़ते थे because the language they were using decentralized DAO शॉर्टकट डिफी सेंट्रलाइज्ड टोकन डैम, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था. डिक्शनरी मैंने एक डिक्शनरी भी बनाई है बाय द वे. आई विल शेयर विद पीपल Yeah. who really answer me well on the calendly questions. तो आओ आप लोग तो मैं आपको डिक्शनरी भी दे दूंगा. और उसमें Amazing. आई हैव लिस्टेड ऑल दिस वर्ड्स, सो आपको सॉर्ट आउट हो जाएगा. तो व्हेन दे आर टॉकिंग जार्गन्स आपको सिर्फ वो डिक्शनरी रेफर करना है. तो दैट्स व्हाई आई मेक इट वेरी सिंपल, क्योंकि देखो आई फील के अगर एक 7 साल का बच्चा ये करना चाहिए तो उसको जो लैंग्वेज में आना चाहिए, आई विल डिजाइन माई कोर्स इन दैट. दैट्स अ वेरी बिग चैलेंज because so much technical around that, but there are methods to make it very simple. And I'm telling you honestly, the logic is very very simple. यार किसी को 1 रुपया देना है ना, तो 1 रुपया देना है, लेने वाले को भी मालूम है 1 रुपया लेना है, मुझे भी मालूम है 1 रुपया देना है. तो जब ये इतना सिंपल ट्रांजेक्शन हम अदरवाइज कर लेते हैं, बच्चा भी कर लेता है, उसको आप 1 रुपया दे दो, जाके 1 रुपये का सामान 5 रुपये का लेके आ सकता है. तो फिर क्रिप्टो भी तो एक करेंसी है, उसमें इतना डिफिकल्टी क्यों करना है, उसको भी सिंपल बनाना है. So that's the objective. Amazing, amazing. एक क्वेश्चन और आया हुआ है. Give me Yeah. just a second while I display it. Is there any way to lose money in P2P transaction if there is any fault in the crypto system or the distributed blockchain? Okay. So is there a chance to lose money? Yes, there is a chance to lose money.
ओके, जैसे आपका वॉलेट कितना भी बड़ा हो, आपकी तिजोरी कितनी भी कड़क हो, आप में पैसा चोर आएगा तो लेके जा सकता है, राइट? सो दैट्स Yep. एग्री अपॉन दैट। बट Yep. लेट्स अंडरस्टैंड द सिस्टम प्रोटेक्शन। जैसे कि सिस्टम में, जैसे कोई भी एक्सचेंज में, वेन एवर देर इज अ ट्रांजेक्शन हैपनिंग, द एक्सचेंज नोज कि भाई किसका लेन देन चल रहा है आपस में। सो Yep. इफ ए पर्सन इज सेंडिंग बी पर्सन, इवन इन द पी टू पी, दे आर द इंटरमीडिएटरीज। मतलब अगर आप एक पर्सन ए टू इज सेंडिंग टू बी इन द मार्केट ऑलरेडी नोज क्या हो रहा है। तो एक्सचेंज इज नोइंग कि क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है। नाउ वेन एवर यू आर मेकिंग अ ट्रांजेक्शन, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मान लीजिए एक बिटकॉइन है और मुझे एक बिटकॉइन सेल करना है एक्सचेंज में। तो जैसे मैं वो सेल के ऑप्शन में जाता हूँ, मेरे वॉलेट से बिटकॉइन लेके एक्सचेंज अपने वॉलेट में रखता है, दैट्स कॉल्ड एन एस्क्रो अकाउंट। Mm-hmm. ओके, वो वहां से चला जाता है। सो आई कैन नॉट सेल वन थिंग टू मैनी पर्सन, सो Okay. दैट इट इज, जैसे एक ही चीज 10 लोगों को मैं पेमेंट ले लिया और Yeah. डिलीवरी एक को दे दूं, वो नहीं Yeah. पॉसिबल है इसमें। Yeah. जैसे सो द लैंड के एक्सचेंज, साथ होता हाँ, है. लैंड के साथ होता है। तो एक्सचेंज तुरंत लॉक कर दो, जैसे आपने सेल का बटन दबाया आपके वॉलेट से चला गया वो, इट इज Okay. नाउ इन देयर कस्टडी, आप कुछ नहीं कर सकते, अब आपको सेल ही करना है। Yeah. ओके, और यू कैंसिल दैट ट्रांजेक्शन, इट कम्स बैक टू यू। Yeah. Okay, secondly, as soon as the buyer, buyer has to show a payment confirmation कि मेरे को किसी ने पेमेंट दे दिया। सो आई हैव somebody paid me via कैश दे दो, यूपीआई दे दो, जो भी सिस्टम से मुझे पेमेंट आया, आई हैव टू एक्नॉलेज दैट पेमेंट कि भाई मुझे पैसे रिसीव हो गए। जब तक मैं वो एक्सचेंज को नहीं बोलूंगा, वो उसको, वो बिट करेंसी को दूसरे के वॉलेट में नहीं भेजेंगे। और ये 15 मिनट का विंडो होता है टाइम का, जिसमें Mm. ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है। अगर ये विद इन 15 मिनट्स नहीं हुआ तो कैंसिल हो जाता है, मेरा बिटकॉइन मेरे पास, आपके पैसे आपके। सो Okay. विद इन द सिस्टम इट इज नॉट पॉसिबल, आउटसाइड द सिस्टम इज पॉसिबल। जैसे कि मान लीजिए किसी ने मुझे पैसे भेजा और मैं डिनाई कर दूं, भाई मैंने पैसे रिसीव ही नहीं किए, झूठा केस कर दूं, नहीं नहीं उसने भेजा ही नहीं मुझे, मेरे आ गया, तो फिर एक्सचेंज आपका होल्ड करेगा। दे विल आस्क फॉर योर बैंक स्टेटमेंट, योर ऑल दोस थिंग्स, यू हैव टू प्रूव दैट एंड देन दे विल रिलीज इट। So technically it is very rock solid. Be rest assured. Amazing. Yes, yes, Awesome. Before I go on to my next question, yes, Dr. Kamal is saying amazing dictionary to simplify crypto jargon. Looking forward to read absolutely, that. Yes, if absolutely, you book a absolutely. free consultation, you're gonna You get will a get it. gift from Yes, Mr. Raees, which is the total dictionary to help you understand all of the complicated terms and terminology that you will see if you try to learn it from any YouTube channel or true. anything, any news media and all. They just make it too complicated. Correct, correct. Mr. Raees's mission over here is to make it as easy to understand as a 7-year-old. Some people have also commented, yes, you Yes. did make it easy for us Thank to you. Thank understand on this you. Thank session you. as Thank you. much as a 7-year-old. So amazing. Let's go to the next question, which is what do you think is the future potential of this industry in India? जिस तरह कहते हैं इंश्योरेंस के बारे में कहते हैं, India is Right, only 3% insured, right. potential is to be 60% insured or True, whatever. true, 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 So true. what do you think, at which stage are we, Okay, and like how big can we grow, or is it oversubscribed in India, undersubscribed? What is the okay. real truth? Okay, so the rate of growth is more than 800%. Okay, these Wow. are all research work, so I can share the research things. Yeah. And after 2008, 18, the adoption of especially after notebandi hui thi India mein. So Mhm. that was the biggest trigger point for crypto industry in the Indian market, and that is the time where a lot of companies started flourishing in the crypto business. Okay, तो उस टाइम पर से लेके अभी तक यूएस और जापान एंड दिस एडवांस कंट्रीज वर दी क्रिप्टो, वहां पर बेस था उनका। बट Mhm. दे इंडिया हैज बीटन ऑल द कंट्रीज टुडे। द गुड न्यूज इज देयर आर 10 crore users in India Okay. who Okay. are using cryptocurrency. So it's a, you can understand that itna bada population already invested hai. 10 crore is a big number, these are all Yep. verified numbers. Yep. Okay, now because of the simplicity of adoption curve in India, why people are doing this is because, first of all, India as a IT is the IT capital of the world, right? So people are technically aware of that power. ओके, Yes. सो ये पावर है। और जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई है, वेब 3, ये लोगों के लिए आई है। सी, इट इज नॉट गोइंग टू सपोर्ट एनी controlling system. I will not name what that controlling system might be, but it has come to diffuse that power and give power to people. तो अब आप पावर कोई आपको देने आया है, so when you want power is your choice. I need it today, I need it yesterday. मुझे Yes. तो जल्दी चाहिए पावर, व्हाई शुड आई गेट कंट्रोल्ड? सी, अल्टीमेटली वी लिव ऑल इन फ्री लैंड, फ्री कंट्रीज, एवरीथिंग इज फ्री, वी आर फ्री Yeah. बाय विल, राइट? सो Yeah. Yeah. मनी, व्हेन इट कम्स टू मनी, व्हाई आर वी नॉट फ्री? Yeah. So Yeah. Yeah.
आज हम वननेस की बात कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, मार्स की, दूसरे प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं, तो व्हाट करेंसी शुड बी यूज्ड ऑन दोस प्लैनेट्स बाय द वे? Yeah, which yeah. so every country will say नहीं हमारा चलना चाहिए, यूएस माइट से यूएस डॉलर चलना चाहिए, पुतिन माइट से नहीं मेरा वही चलेगा, रूबल चलना चाहिए, चाइना माइट से नहीं नो आई डोंट एक्सेप्ट युआन वी विल एक्सेप्ट। सो ये कॉन्फ्लिक्ट वहां भी होगा। सो डिफैक्टो करेंसी स्टैंडर्ड इज रिक्वायर्ड where the beauty of crypto, why I love crypto so much, because I have dealt in some time before in foreign currencies also. Now $1 of USD, let's say, इसका इंडिया में रेट अलग है, पाकिस्तान में अलग है, बांग्लादेश में अलग है, हर कंट्री में अलग है, राइट? Yep, yep, इवन समटाइम इन द लोकल बैंक टू बैंक, शेयर टू शेयर भी आपको अलग मिलेगा, yep, yep, yep. करेक्ट? Absolutely. मतलब Yes. करेंसी एक, रेट अलग अलग, यूएस डॉलर का यूएस में अलग वैल्यू, सेम विद अदर ऑल अदर कंट्रीज। In fact, duty-free shop pay, they ask you, do you want to bill in rupees, bill in dollars? If राइट, you bill in dollars, the rate is different from the rupee to dollar to conversion. एब्सोल्युटली, तो आप एब्सोल्युटली, कहते हैं यार ये क्या है, कौन सा रेट सही है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, मतलब आपकी खुद की करेंसी का रेट भी, मतलब वो अपने हिसाब से ही डिमांड सप्लाई बनाते हैं। सो Yeah. अगर अगर लोग बोलते हैं कि रुपी या कोई भी करेंसी स्टेबल है, द Yeah. मोमेंट यू टेल इट इज स्टेबल, इट इज अ लाई, बिकॉज गो टू द इंटरनेशनल एक्सचेंज, आप Yes. फॉरेक्स में जाओ, आपको मालूम पड़ जाएगा कितना स्टेबल है। एवरी मोमेंट इट इज अ फ्लक्चुएशन, Yes. डेली Yes. न्यूज आती है हमारा पैसा 40 पैसे ऊपर चला गया, 8 आना ऊपर चला गया, सो नोबडी बॉदर्स बिकॉज इट Yes. इज नॉट अफेक्टिंग देम, बट Yes. द करेंसी इज नेवर स्टेबल इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो क्रिप्टो भी स्टेबल नहीं है। बट आई कम बैक टू द क्वेश्चन वाज दैट, कैन यू रिपीट दैट क्वेश्चन? आई लॉस्ट दैट। The stability की तो खैर बात नहीं होती. We are talking about like what is the scope of Yes, we are India talking to, about yeah, the scope. So, of India to yeah, gain from I this was sharing, phenomenon. I was sharing why I love so much. So even the buying and the selling rates are different. See, when I have a dollar, if I go to a bank, they will Yes. sell me at a Yes. different rate. But Yes. I want to give the back same dollar again to Yes. them. Yes. They will Yes. say, नहीं नहीं, Yes. आपने खरीद Yes. लिया, अभी आपसे हम वो रेट में नहीं लेंगे। That is true. Right? So all these things, are like killing है यार, छोड़ Yeah. दो अभी। So this will never happen in cryptocurrency. Yeah. All over the world it will have a single rate, whether you buy, you sell, you do whatever it is single rate. So that is the de facto standard which I loved about the cryptocurrency, कि यार आपको एटलीस्ट हर जगह पे सेम वैल्यू मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप अमेरिका में हो तो कोई ज्यादा वैल्यू दे रहा है और इंडिया में तो आपको कम दे रहा है, इट डजंट इफेक्ट। सो इट इज रियली फॉर ऑल द वर्ल्ड पीपल। तो इंडिया में आई एम टेलिंग यू, बिकॉज ऑफ द यंग पॉपुलेशन, द यूथ, सी वी डिड अ एनालाइज अ सर्वे, और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स है आर अंडर 34 years ऑफ एज। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो यूथ है, ये कितना बड़ा बेस हमारा क्रिप्टो करेंसी में आ रहा है। दिस आर ऑल एजुकेटेड पीपल, दे आर ऑल wonderful, and I'll be very happy and it's an honor, and we all Indians should be proud of that three boys from Ahmedabad, they made a blockchain project which is called Matic, and Polygon उनकी blockchain का नाम है, Matic उनकी क्रिप्टो करेंसी का नाम है। that is the world number 5 cryptocurrency of the world right now. So it's a very, three boys, IITs के बच्चों ने बनाया वो कॉइन, ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स का उनका वर्थ हो चुका है, और दे आर नेक्स्ट जनरेशन बिलियनर ऑलरेडी इन 3-4 years they have become, and the world has accepted, even the metaverse as a technology, Facebook are Yes. using their blockchain। जो आरोग्य सेतु ऐप है हमने यूज किया ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स, इज Yep. डिप्लॉयड ऑन मैटिक ब्लॉकचेन। तो बहुत सारी Wow. चीजें हमने यूज की लेकिन हमको पता ही नहीं चला क्या है पीछे, राइट? सो आप Yes. सोचिए, इतना यंग कंट्री है हमारा, इतना एजुकेटेड क्राउड है, उनको एक फ्री सिस्टम चाहिए, एंड एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज। आई थिंक इंडिया इज गोइंग टू रूल द क्रिप्टो मार्केट इन द कमिंग डेज। दैट बिग इज द पोटेंशियल ऑफ द मार्केट इन इंडिया। Amazing. Amazing. Awesome. Zubair sir is पूछ रहे हैं crypto will be a universal currency with no boundaries. Yes, I think the ऑफ answer is कोर्स, yes. यस, इतना तो मैं भी समझ गया इस इंटरव्यू यस, के यस, बाद. I can also give some answers now from the learning I've got. थैंक यू वेरी मच, दिस इज ऑनर। सी सिंपली अंडरस्टैंड, अगर आपको एक वर्कशॉप रख रहे हैं अभी, और Yeah. वो वर्कशॉप में लेट्स से अगर आपके वर्कशॉप में वर्ल्ड से भी लोग आ सकते हैं, राइट? Yeah. बिकॉज द Yeah. प्लेटफॉर्म इज ओपन एनीवेयर। सो Yeah. व्हिच करेंसीज दे शुड पे, आप ये देख के कर लो, उनको बोलो यूएसडी में भेजो, आप आपको 2 महीना लग जाएगा सेटलमेंट करते करते, वो Yeah. लाने और लेके जाने, राइट? Yeah. सो बट इफ यू फॉलो द रूल्स, यू कम, यू डू द केवाईसी, वहाँ उनकी एक्सचेंज पे उनकी केवाईसी हुई है, Hmm. आपकी एक्सचेंज में आपकी केवाईसी हुई है, आप कर सकते हो ट्रांजेक्शन, एज लॉन्ग एज इट्स क्रिप्टो, नो प्रॉब्लम। Amazing.
Yeah, yeah, yeah. Awesome. For once again, real quick, in case you want further answers, he's opened up some slots on his calendar. You Yes. can just go and ask him any questions. If you have any questions, how you can be a producer at Startup Frat, we encourage you to become a producer on any kind of technology or any kind of asset class. Don't think about whether it's going up or down. A lot of people talk about these things कि अच्छा वो नेटवर्क मार्केटिंग ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, whether FD is going up or down, or stock market is going up or down. These are asset classes you need to understand. Don't be a consumer, be a producer. Understand Absolutely. more about it and learn to play the Absolutely. game as one Absolutely. of the players in the ecosystem. And the Absolutely. best guy to actually consult is calendly.com/crypto Raees. Thank you so much. Amazing. थैंक Awesome. यू सो मच। आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला सर, आई थिंक आई वुड नीड टू हाईलाइट दैट पॉइंट बिकॉज सी जनरली वेन एवर न्यू थिंग कम्स Yeah. एंड पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट थिंग, द फर्स्ट रिएक्शन इज गार्ड इट एंड डिस्क्राइब इट एज इलीगल। जैसे I still remember in my older days. Now I don't know because I am not much on the field. Yeah. Whenever I used to show even the MLM plans to people or talk Yeah. about it, वो चुपके से पूछते थे क्या ये लीगल है, ये चेन बनाने वाला सिस्टम लीगल है या नहीं। कैन यू इमेजिन कितना बड़ा टर्नओवर ये कंपनीज कर रही है इंडिया में, एंड Yeah. देयर इज पीपल स्टिल सेइंग दैट ये लीगल है या नहीं। आई स्टिल रिमेंबर इन द अर्ली इंश्योरेंस पीपल जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में है, व्हेन Hmm. दे वर सेलिंग इन द अर्ली डेज, देयर वर नो आईआरडीए, कुछ भी नहीं था, लॉज नहीं थे, Yeah. Yeah. तो उसको इंश्योरेंस को भी इलीगल समझा जाता था कि Yes, व्हाट इज yes, that इंश्योरेंस, is true. इज That इलीगल। is true. That is true. इवन टू द मैटर कि आज जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, हमारी प्राइड है, पठान क्रॉस 100 करोड़, फिल्म इंडस्ट्री वाले आदमियों को भी इलीगली बोला जाता था। Yes, 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 that is Right? true. So abhi crypto is becoming a industry, try to understand. Yes. So the window of opportunity is still there. You can make as much as money within that window of opportunity. जैसे एक रॉकेट लॉन्च का एक प्रोसेस होता है, जो जब भी आप पढ़ोगे, मैं पढ़ता हूँ कभी कभी उनके लॉन्चेस देखता हूँ, एंड आई ऑलवेज वंडर यार, अगर वो 5 सेकंड डिले हो गया या 1 घंटे के बाद, तो वो पूरा नेक्स्ट क्यों 1-2 महीना 6 महीना क्यों चले जाते हैं वो लोग। तो द आंसर इज नॉट सिंपल, वो पूरे कैलकुलेशंस है, टेम्परेचर के, एयर प्रेशर के, फलाना ढमकाना, सब उतने ऑर्बिट में कब जाएगा, कितने किलोमीटर पे, एंड इवन इफ दे मिस दैट लॉन्च by some fraction of the second, they cannot launch that rocket, they have to cancel the entire operation. सो दैट इज कॉल्ड द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। उसके पीछे बहुत बड़ी साइंस एंड सो मेनी साइंटिस्ट का फ्यूचर वर्थ मनी सब लगता है। वो विंडो आपने मिस किया तो आपका रॉकेट लॉन्च नहीं होगा। तो राइट नाउ क्रिप्टो इज दैट विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। इसमें बहुत सारा रेगुलेटर नहीं है, बहुत सारी चीजें बहुत सिंपल, बहुत इजी है। मेक श्योर मनी एंड रिटायर अर्ली, मजा करो, ऐश करो। Amazing, amazing. Zubair sir is here. Mr. Santosh is saying amazing. Mr. Devashish is saying that's great information. Ms. Ritu is saying you're the king of crypto knowledge. Amazing, awesome. Mr. Sumit is saying I think I will watch this interview multiple times and offer this opportunity to my clients as well. थैंक यू सर, थैंक यू, There is थैंक यू। somebody who's asking about your income potential also, but they will have to, I think, book a consultation. Please Yes, book a yes, consultation. Ask him in yes, private. yes. He'll be very open, Yeah, yeah. as he has been with us so far. Awesome. So, real quick, before we close for the evening, you have any, you've gained anything from the startup frat community, and what would you recommend to other people if they're watching this? A word from our sponsors can we have about the startup frat community? What have you learned, Fantastic. and what would Okay. you recommend? Thank you, all of the good people. You've been very generous with the comments and very, very encouraging, and that always puts me in that role where that I have to give more. Because people really are excited about this, and they are so eager to learn. So that gives me a lot of pleasure to myself, that whatever time I'm investing in research and all of that, कोई तो है यार उसका वैल्यू कर रहा है। So I really love and I'm very thankful for your comments. And ये ये जो क्रिप्टो की अपॉर्चुनिटी है, आई बिलीव इट इज फॉर एवरीबडी एंड एवरीबडी शुड टेक एडवांटेज ऑफ इट। ओके, आई एम देयर टू सपोर्ट। कोई नहीं भी होगा तो डेफिनेटली द इंटरनेट वर्ल्ड इज देयर टू सपोर्ट एज अ कम्युनिटी। ओके, एंड इट इज सुपर इजी। व्हाई? बिकॉज आज हमारे पास एक्सेस थैंक टू जियो, fast internet connections hai, so Yep. many coaches are there. Now the moment I saw Rajat sir in one of the meetings, I
felt that I'm talking to a person who is a revolution. He's having that rebellious thing, not to accept that so-called set standards of society. And मुझे बहुत सिमिलरिटी मिली, बिकॉज क्रिप्टो भी ऐसा ही है. इट इज नॉट लाइक अ कन्वेंशनल पेमेंट सिस्टम, इट इज अगेंस्ट दी कन्वेंशनल पेइंग सिस्टम. जैसे ईमेल है, पोस्टल डिपार्टमेंट विल नेवर लाइक ईमेल्स, बिकॉज थिएटर्स थिएटर्स विल हेट नेटफ्लिक्स. थिएटर जस्ट हेट नेटफ्लिक्स. वो जैसे क्या है ये नेटफ्लिक्स, थिएटर की बात अलग है. तो देयर विल बी सर्टेन टेक्नोलॉजीज, और वो कंटिन्यूस वो टसल चलता रहेगा, between the new technology and the older one. But that's the generation gap. So I feel that when I came to this group, I felt that I'm working with a very ahead thinker group, which is really thinking ahead. जो वही conventional methods, में नहीं ढूंढ रहे. Same input same output. When even we know that as a mathematics, फिर भी हम वो same input डाल के expect करते हैं कि हमारा output अलग होगा. शायद हमारी किस्मत चमक जाएगी, उसकी नहीं चमकी, हमारी चमक जाएगी. So I found that स्टार्टअप फ्रैट में जो सिस्टम डेवलप किया गया है, एज एन एंटरप्रेन्योर, उसने मेरे ब्रेन के थॉट प्रोसेस को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया. बहुत क्लैरिटी हो गई मुझे प्रोडक्ट पोजीशनिंग में, द प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में. क्योंकि क्रिप्टो में जैसे देयर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स आई कैन शो पीपल. कोर्स को पैकेज में अलग अलग मेथड में कर सकता हूँ, अबाउट माइनिंग, अबाउट ट्रेडिंग, अबाउट दिस. सो आई वाज कंप्लीटली लॉस्ट समटाइम्स कि यार मैं क्या सीखा हूँ यार, और कौन सा टारगेट मार्केट को सीखा हूँ. शुड बी स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेजेस, शुड बी ग्रोन अप्स, शुड बी रिटायर्ड. आई हैड आइडेंटिटी लॉस कि मैं क्या करूँ, पैसिव इनकम ले लूँ या एक्टिव इनकम. सो I really was wondering, but when I did the product positioning, sheet is a gold nugget. I'm telling you, it's a golden nugget of this particular course. और अगर आपने वो नहीं किया है, so I'm telling you, you have no right to go to the customer, because आपके धंधे को आप खुद नहीं मालूम आपको. ये यो शीट और ये कोर्स आपको मजबूर करने पे लगा देगा कि ये धंधा आप क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो. एवरीथिंग, जितना डिटेल आपने 10 साल में नहीं कमाया होगा, शायद आपके दिमाग में है, लेकिन आप सोच नहीं रहे हो. दिस सिंपल शीट इज गोइंग टू क्रिएट दैट रेवोल्यूशन. तो मैंने जब वो अप्लाई किया, उसकी जो स्टेप्स थे, इजी टू यूज स्टेप्स थे, 8 स्टेप्स में, आई फेल्ट यार कि इतना सिंपल कैसे हो गया. मैं तो सोचता था डिजिटल स्पेस में लॉन्च कैसे करूंगा, फेसबुक कैंपेन कैसे होगा, हु विल कॉल, हाउ पीपल विल कम. नहीं चलेगा, चलेगा. फ्री में 99 रुपीज में मास्टर क्लासेस हो रहे हैं, तो मैं 3,000 में कैसे मेरा प्रोडक्ट. दैट वाज द बिगेस्ट थिंग. शुड आई कीप माय मास्टर क्लासेस फ्री, मेरा 3 डे भी फ्री होना चाहिए. एंड आई हैव डन दिस फ्री. और ऑनेस्टली आई got a confidence from this platform कि yes, it can be sold. All information producers have the right to make money via selling their. So that ease of work with dignity that platform has honored. Amazingly, when I had my first masterclass in startup, the same moment people registered, तो वो मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हुआ यार. कि यार my knowledge is worth selling. My knowledge. So जो मैं कर रहा हूँ, definitely there are people on the other side who was ready to pay. So this is the platform. It's a market, I would say. जैसे इसकी क्रिप्टो की भाषा में मार्केट बोलते हैं, तो ये भी एक Yes. मार्केट ही है, जहाँ पे मल्टीपल लोग हैं जो एक इकोसिस्टम का भाग हैं. एंड एवरीबडी रिक्वायर्स द अदर प्रोडक्ट. मतलब ऐसे नहीं है कि घर में एक प्रोडक्ट आ गया तो सारा काम उससे होगा. भाई दूध भी चाहिए, पानी भी चाहिए, टेलीविजन भी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी. तो सारे सप्लायर्स, सारे इंफॉर्मेशन के मास्टर्स, अपने अपने फील्ड के चैंपियंस आर सिटिंग हियर. इट्स आई डोंट नीड टू गो आउट एंड सर्च नाउ इन अदर एरियाज. मैं आई वाज पार्ट ऑफ द बीएनआई ग्रुप्स एंड आई वाज दैट, बट हर मीटिंग में मुझे वो टेंशन रहता था यार, अब मैं किसका रेफरेंस शेयर करूं यार. और वो रेफरेंस शेयर करने के बाद अगर उनको सही सर्विस नहीं मिली, तो मेरा रेफरेंस मुझे गाली देगा. बट यहाँ पे आई हैव टेस्टेड लॉट ऑफ वर्कशॉप्स एंड मास्टर क्लास, एंड आई एम अश्योर्ड कि यार दिल से मैं किसी का रेफरेंस दे सकता हूँ. जैसे आप भी अभी आज आज शायद आपको अच्छा लगा, नहीं लगा, आई डोंट नो. मे बी आपको ये तो लगा होगा कि यार क्रिप्टो का अगर किसी ने पूछा तो यार रईस का नंबर मैं Raees Ji is the best. He is the number one. this is Yes. only coming because of this platform, Yes. because of Yes. the confidence and the amount of work, I would say, and discipline we have put to develop such a very easy system. क्योंकि मुझे Yes. मालूम है, अगर मुझे कोई चीज को इजी बनाना है, तो उसके पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारा हार्डवर्क जाता है. That's Yes. why it become easy. Otherwise, it will become very technical, difficult, and impossible to implement. मैंने Yes. बहुत सारे सिस्टम्स का पार्ट रहा हूँ, एंड आई गेव द कमेंट टू देम.
It's an excellent system where you can be the implementer and beneficiary. I can only be the audience. I can come and enjoy जस्ट लाइक अ मैच, और वो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, वो क्रिकेट Yes. खेलना आपकी तरह मैं सीख नहीं पाऊंगा. I Yes. cannot. But here I am telling you, it's like an academy where we are learning to play our skills. So Yes. hats off to you, Rajat sir. I am privileged, and I will always be a part of the membership. It helped me to get rid of my late nights, क्योंकि क्रिप्टो में the US markets हैं, लंदन मार्केट्स का. So I used to have a habit of लेट में सोता था, सुबह लेट होता था. But अभी, because of the 6 a.m. club, I'm getting back. My health has improved, and people just meeting me now are saying, यार तुम young लग रहे हो यार थोड़े. Tell me what is it. So वो भी क्रेडिट मैं ये देना चाहूंगा, बिकॉज ऑफ द चेंज हैबिट्स, इट इज कीपिंग रिपल इफेक्ट to me in a lot of other areas of my life, and I am super happy to become part of this community. And I thank Dr. Rajat from the bottom of my heart for giving this opportunity to all entrepreneurs and keeping their dream alive, because we know what is, there are too many air or storms in the market, where वो एक जो ड्रीम होता है, एक छोटे से फ्लेम की तरह होता है, फूक मारते वो बुझ जाता है. बट बियॉन्ड दैट फ्लेम कितने लोगों के चूल्हे घर के जल सकते हैं, ओनली द एंटरप्रेन्योर नोस कि यार मैं जो क्रिएट करने वाला था उससे क्या क्या रेवोल्यूशन, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है, कितना बड़ा हमारी कंट्री कितनी प्रोग्रेस पे जा सकती है. बट वो ड्रीम मर गया. तो यू आर गिविंग that chance for that flame to become a huge fire, and an enormous fire which can actually, not only India, the entire world tomorrow will actually be the customer base for us. Awesome. So And I'm thankful to you for recreating that in the crypto space. thank you, sir. आपने ये Thank you पूरी very much. जर्नी दूसरों के लिए आसान कर दी, and it Thank is a you very huge much. opportunity. Whoever is the gateway who helps other people to enjoy and be a player in the crypto space, which is people like you. You're taking the flame forward, so you're a true startup fratter. Thank Thank you you, sir. so much for all your Thank you, time today. Really, thank you. really enjoyed, learned a lot, and all the audience also, they learned so much. Uh, Thank you. he's saying it's a Yes, Diwali session. yes, sir. He's awesome, man. Amazing. Super happy to be here. Thank you so much, Raisa. Thank you Thank for your you. time. Thank you. And Thank you, sir, for giving me a chance to speak my heart. And I did not rehearse, I was in the late minute here. So whatever I spoke, it's from my heart. If I felt some words which you might offend you, I'm really sorry. अगर आपके कुछ logical belief system को मैंने थोड़ा सा हिलाया, so take it in a very positive way. ये दोनों चीजें प्री रिक्विजिट है स्टार्टअप फ्लैट की. ए, यू डोंट हैव Fantastic. टू रिहर्स, स्पीक फ्रॉम द हार्ट, एंड बी डिस्टर्ब Fantastic. सम एग्जिस्टिंग सिस्टम. Absolutely. So I am a true patriot and a true student of your academy. Thank you All very much. righty. Look forward to seeing you, sir, on the other Thank you, side. sir. See Thank you. you. Bye bye. Checking out. Bye. Thank you.